રાજા રઘુવંશની હત્યા કેસમાં સોનમનો ભાઈ ગોવિંદ અચાનક ઇન્દોરમાં રાજાના પરિવારને મળવા પહોંચ્યો। ઇન્દોરના ટ્રાન્સપોર્ટ બિઝનેસમેન રાજા રઘુવંશીની હત્યા કેસમાં પત્ની સોનમ સહિત 5 આરોપીઓને ટૂંક સમયમાં શિલોંગ કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવશે। આ દરમિયાન સોનમનો ભાઈ ગોવિંદ અચાનક ઇન્દોરમાં રાજાના પરિવારને મળવા તેમના ઘરે પહોંચ્યો। ગોવિંદ રાજાની માતા અને ભાઈને મળ્યો તે તેની માતાને ભેટીને રડી પડ્યો। ગોવિંદે કહ્યું કે આરોપી રાજ કુશવાહ અને સોનમ વચ્ચે કોઈ અફેર નહોતું। તે રાજને ખબર રાખડી બાંધતી હતી। રાજાના હત્યારાઓને સજા મળવી જોઈએ। રાજાના ભાઈ વિપિને કહ્યું કે ગોવિંદ ઘરે આવ્યો અને માફી માંગી। તેણે કહ્યું, મમ્મીજી, મારી બહેને ભૂલ કરી છે। સોનમને તેણે કરેલી ભૂલ માટે સજાએ મોત મળવી જોઈએ। આ દરમિયાન રાજા હત્યા કેસના તમામ આરોપીઓને ટૂંક સમયમાં શિલોંગ કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવશે। પોલીસ અહીં તેમના રિમાન્ડ માંગશે। આ પછી પોલીસ આરોપીઓને રૂબરૂ લાવી શકે છે। સૂત્રોએ સીન રિક્રિએશન વિશે પણ વાત કરી। રાજા અને સોનમના લગ્ન 11 મેના રોજ થયા હતા। રાજા અને સોનમ 21 મેના રોજ શિલોંગ પહોંચ્યા હતા। તેમણે છેલ્લે 23 મેના રોજ તેમના પરિવાર સાથે વાત કરી। રાજાનો મૃતદેહ 2 જૂનના રોજ મળી આવ્યો। 17 દિવસથી ગુમ સોનમ 1 દિવસ પહેલા 9 જૂનના રોજ ગાजीपुરમાં મળી આવી। આ પછી જ હત્યાનો ખુલાસો થયો હતો। उसने कबूल करा नहीं करा मुझे आइडिया नहीं है। मैंने ऐलान कर दिया कि उसने जुर्म करा है। उसके लिए मैं खड़ा हूँ। मैं खुद उसकी लड़ाई लड़ूंगा। मैं राजा के साथ हूँ। आप सोनम को बाइकआउट कर रहे हैं? मैं बिल्कुल सोनम को बाइकआउट कर रहा हूं। आपके माता पिता अभी भी इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आप बॉयकॉट करेंगे? नहीं, हमारे माता पिता ने स्वीकार कर लिया है। देखिए, सुबह 8 बजे जब आप लोग पहुंचे, मैं उस समय फ्लाइट में था। मैं माँ बाप को बता नहीं पाया था, इसलिए मेरे पिताजी ने बहुत सारे बयान दिए हैं। मगर उसमें यह है कि उनको कुछ भी नहीं पता था। जब मैंने उनको बयान करा तो उसके बाद में बाइकआउट उनने भी करा है और वो मीडिया के सामने नहीं आ पा रहे हैं। और पिताजी मेरे हार्ट अटैक पेशेंट है, तो मैं खुद नहीं चाह रहा हूँ कि वो मीडिया के सामने आए, और क्योंकि अभी बहुत नर्वस हैं हम लोग, इसलिए। आप सोनम को बॉयकॉट करेगा आपका परिवार? बिल्कुल करेगा। परिवार नहीं करेगा, पूरा समाज करेगा। आपने माफी मांगी परिवार से? बिल्कुल, मैं माफी तो मैं मांग रहा हूँ, मगर देखिए, माफी मांगने से मेरा कुछ भी नहीं होगा। मैं हमेशा दंडवत प्रणाम करूंगा इनको, और मैं हमेशा इनके साथ खड़ा हूँ। मुझे आइडिया नहीं था। हत्या के पीछे वजह क्या लगी सोनम को? देखिए, उससे बात होती तो मैं आपको सब बताता। उससे इतनी बात नहीं हुई है। मैं आपको बयां करूंगा। थोड़ा सा ये 10 दिन का जो इनका पुलिस रिपोर्ट है, ये हो जाने दीजिए। सोनम को सजा दिलाएंगे? बिल्कुल दिलाएंगे। मेरी तरफ से वकील खड़ा होगा इसमें। सोनम के खिलाफ आप वकील खड़ा करेंगे? नहीं, राजा के खिलाफ हम वकील खड़ा करेंगे, और सोनम के खिलाफ वकील खड़ा करेंगे। राजा की तरफ से रहेगा वो, मैं बोल रहा हूँ आपको।